नमस्कार, अमेज़न प्राइम पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, इस शो की होस्ट खुशबू शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज रविवार है, संडे है, बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी है। हालांकि कोविड है, कुछ लोग घर पर ही हैं, उन्हें वैसे भी आज़ादी है। लेकिन आज़ादी सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं होती है, मानसिक तौर पर आज़ादी होना भी बेहद ज़रूरी होता है। और वो कब होगी? जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारा नज़रिया सकारात्मक होगा। अगर हम सकारात्मक नहीं रखेंगे अपने नज़रिए को, तो ज़िंदगी चाहे कितनी भी आसान हो, वो मुश्किल लगने लगेगी। तो आज अपने वादे के मुताबिक हम पॉजिटिव थिंकिंग पर या आपकी सोच पर आधारित ये एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हमें बहुत सारे सवाल आपकी तरफ से मिले हैं। और हमें ये बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि आप हमारे इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं और आपके सवाल हमें ये बताते हैं कि ये शो वाकई आपके दिलों तक पहुंच रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को पसंद करने के लिए। तो चलिए, इस शो का हिस्सा जो बनती हैं और जिनकी वजह से शायद ये शो लोकप्रिय हो रहा है, उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो इटली से हैं, हम हमेशा आपको ये बताते हैं। और साथ ही ये भी कि वो पिछले 10 सालों से भारत में रहती हैं और भारत ही अब उनका घर है। वो भारत के कल्चर को, कलर्स को और जो कस्टम्स हैं यहाँ की या जो रीति रिवाज हैं, उसको बहुत पसंद करती हैं। और शायद यही वजह है कि भारत को छोड़ के जाने का उनका मन नहीं करता है। इसलिए अब वो हमारे समाज का और हमारा एक हिस्सा है। तो चलिए, मैरिएला ज़ानोलेटी हमारे साथ मौजूद है, स्वागत करते हैं। सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो आपके और हमारे मन से जुड़ी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मैरिएला का। मैरिएला, once again welcome to the show. How are you? Hi Khushbu, hi. I'm good. Thank you for having me again. Yes, very nice to meet you. Yeah, it is seriously आप pleasure कि आप हमारे शो पर आती हैं, हमारे शो का हिस्सा बनती हैं। Thank you so much. Okay मैरिएला, जैसे हम शो की शुरुआत करना चाह रहे हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग पर हम लोग बात कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बेहद ज़रूरी है हर इंसान में होना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, बहुत लोगों ने सवाल पूछा है कि अक्सर हम वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। क्या है पॉजिटिव थिंकिंग? व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? I'm sure, Khushbu, you have heard many times, you know, when they say, oh, is this glass half empty and half full? Yes, and it depends on, you know, if you are pessimistic or optimistic, you will define it or you will see it differently. And positive thinking means that you see the glass half full. It means that your outlook on life is positive and your attitude towards yourself is seen through some, I would say, positive lens. That does not mean that you ignore all the negative thoughts or the negative emotions which we all go through life, but we acknowledge that certain situation, of course, requires certain kinds of thoughts and pain and emotions. But when we have a choice, like half full or half empty glass, you can decide. It's a choice. You can see, you can look for the positive in almost everything. And remember, there are negative things happening in life and we acknowledge them, but when we have a choice, maybe you want to choose to look, you know, using the positive lens, as I said. Yeah, it depends on your attitude. Yes. Yeah, and seriously, बिल्कुल सही। हमने भी हमेशा सुना है कि जब भी नज़रिए की बात आती है, और जैसे कि मैरिएला ने कहा कि आधा ग्लास भरा भी है, एक ग्लास जो आधा भरा है, कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है, कुछ लोग कहते हैं आधा भरा है। आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है, आप उसे कैसे देखते हैं। इसी तरह ज़िंदगी की खुशियाँ भी हैं। जिस तरह से दिन होता है, रात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रात है, कुछ लोग कहते हैं कि रात गुजरेगी तभी तो सुबह आएगी, यानी अगली सुबह की शुरुआत है। नज़रिए का फ़र्क है। हियर्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन केम फ्रॉम रंजीत जी फ्रॉम जालंधर। हमारे एक व्यूअर हैं जालंधर में, रंजीत जी। उन्होंने हमें मेल के थ्रू एक सवाल पूछा है, हाउ डू आई आइडेंटिफाई इफ़ आई एम अ नेगेटिव थिंकर? कैसे मुझे समझ आएगा, मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं ये बात कि मैं अब एक नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ? If I think of the question, I might guess that the person might be not such a positive thinker.
Otherwise, you would have not even thought of this question. So there are certain things that you can actually look at, and then it will help you to understand, am I actually thinking positive or not? So pay attention. Do you do a lot of filtering? Meaning, if a situation happens, you don't acknowledge the good and you only spot the negative. There is one sign which can help you to understand which kind of thinker you are. Or if you personalize, let's say you are supposed to have a meeting with your friends, they cancel, and then you think, oh, they cancel because they don't like me. So that you make it about yourself. And then catastrophizing. So something happened and you think, oh my God, it's always gonna be like this. So you make it into a generalization. And polarizing, meaning it's black or it's white, it's good or it's bad. You know, day and night. Yes, without seeing how many other shades are in between. Yes. So that's very nice. और ये बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि आपकी सोच कहाँ जा रही है. अपनी सोच पर थोड़ा एतबार रखिए. हमेशा हर चीज़ को जो है ना वो एक सही और गलत के लेंस से मत देखिए. ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे होने दीजिए. कोशिश कीजिए कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है उसे सही कैसे करना है. और यही एक तरीका है अपने आप में अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने का. सो मेरिएला, हमारे एक दर्शक हैं, उनका सतबीर उनका नाम है, सतबीर फ्रॉम जींद. इट्स अ प्लेस या इन हरियाणा, जींद. तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा है. सवाल उन्होंने हिंदी में पूछा, तो मैं आपसे हिंदी में पूछती हूँ कि हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पर फोकस कैसे करें. हाउ टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, ये उनका सवाल है. Yes, first of all, be aware that it's a process. And just because you know that you want to do it, is not that you're going to be successful immediately. It's going to take time. So it's a process, it's a new habit. Sometimes people say, oh, 28 days, 21 days. I don't know how long it's going to take you, but start the process and trust yourself in the process. So you can identify some areas of change, maybe at work, maybe in your relationship, maybe with your kids. So don't start and to want to change everything immediately. Start from one area and check yourself. Be aware. Am I thinking positive now? Am I thinking negative? What am I doing? You know, during the day you can check. And you need to use humor. Lately I don't know why. I don't know about you. Maybe all this pandemic, this situation, I find myself using less humor. But please, guys, remember, using humor, laughter, be light, give yourself the permission to maybe sometimes not to follow the positive thinking, but don't beat yourself up. As we said, it's a process. Healthy lifestyle. As you know, it's always the base to improve anything, to make any change, is that our lifestyle should be healthy. And surround yourself with positive people. This is something that I've heard lots of my clients reflecting on during the pandemic, during the lockdown, deciding that maybe they want to not be so much in touch with certain people, and realizing that if people are negative, they can have an impact on them. So maybe you want to help your friends and family members to become more positive, or if you find people being too negative and you've been sucked in, maybe put some distance, because that will help. And of course, practice positive self-talk. When you talk to yourself, when you are inside yourself doing your self-talk, internal dialogue, be careful. Apply the positive talk. It's wonderful. जिंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है. चाहे परिवार का सपोर्ट हो, चाहे आपके दोस्तों का सपोर्ट हो, चाहे आपका खुद का सपोर्ट हो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए. खुश रहिए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे गाने सुनिए, लाइट रहिए. ऐसे लोगों से बचिए जो आपको नकारात्मक कर रहे हैं, यानी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको नेगेटिव थिंकिंग में झोंककर आपकी ज़िंदगी को जो है वो तबाह कर डालें. बचिए ऐसे लोगों से. अपने आप को, परिवार को समय दीजिए, और किसी भी तरह में नेगेटिव होकर
हिंसक मत बनिए, आराम से ज़िंदगी जिए। देखिए कितनी आसानी से आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस होगा। ये सवाल है मनप्रीत का, जो कनाडा से हमें लिख रही हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे आपका शो बहुत पसंद आया, मैंने यूट्यूब पर देखा और आई लव योर शो। तो उन्होंने एक सवाल पूछा है, व्हाट आर टेक्निक्स टू बी मोर पॉजिटिव, यानी हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे नियम हैं, कौन से ऐसे कायदे हैं जिससे हम ज़्यादा पॉजिटिव हो सकें। As I said before, we need to keep in mind there is a decision. You need to decide. And maybe it's better if you decide when you wake up in the morning, From the start of the day, you start in a positive manner. As we always say, the positive lifestyle, the healthy lifestyle, meaning be careful what you eat, sleep enough, at least 7 hours, exercise. As you know, I always promote exercise. That is my number one way of keeping myself positive. Having a pet, yes. During the lockdown, a dog came and sat outside the door of my apartment for 6 months. It was so nice. Honestly, that feeling, I never had a dog in my life. So I really, I don't know, it made me feel very good. Unfortunately, then he passed away. It was an old dog. But having a pet, it can bring a lot of positivity in the house. Then you can share your issues. You don't need to deal with your own problems by yourself. As we always say, you need to share, you need to go to friends or family or to see a therapist, but don't try and deal with everything yourself, because that will not allow you to be positive. If you have all these problems and negativity inside you. And also make your house a positive environment, meaning either the kind of care that you put into your house, but also relationship at home, the relationship with your spouse, in-laws, the children. So that is also important. Bring positivity there. And if you add value to somebody else's life, they're also bringing in positivity. If you practice gratitude when you talk to people, remember to be grateful. One of my clients actually implemented this with her children, and every evening before going to bed, they think of the 3 things to be grateful for. And it's funny because the 2 children, a daughter and a boy, find it easier to identify things to be grateful for, but it was more difficult for her as an adult. So sometimes we need to learn from our children. And positive posture. Can you imagine? Even the posture, the way we stand, the way we position ourselves in the space has an impact on the way we think about ourselves and the positivity that we bring in, and then that we reflect outside when we meet other people. Seriously? Yes. Wow. तो यानी ये मुझे तो ये पूरा एक डे चार्ट, इट इज़ लाइक अ डे चार्ट जो आपको अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव करने के लिए अपने हर दिन अपनाना चाहिए। कितनी अच्छी, कितनी साधारण, कितनी सहज बात है। पॉजिटिविटी से खुशी से अपने दिन को स्टार्ट कीजिए। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, परिवार से बात कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। हो सके अगर आपके पास पेट है तो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, वो आपकी ज़िंदगी को कितना आसान बनाएगा। अपने बच्चों से सीखिए, क्योंकि वो कितने भी मुश्किल घड़ी हो वो जानते हैं कि कैसे उसको टैकल करना है। वो मुस्कुराहट के साथ, वो लड़ते झगड़ते जद्दोजहद के साथ उसको आसान बना लेते हैं। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं आगे बढ़ने का। अपने इश्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ जिनको आप चाहते हैं। थोड़ा सभ्य रहिए, खुशी से रहिए, अच्छा खाइए। यही कुछ पॉइंट्स हैं। ज़रा सी बात है ना, सुनने में लगता है कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। Yes, sorry, I need to add something. Yes. Because don't think that now we have all learned what we should be doing and by tomorrow we are positive. Yes. It will take time. It's a process, it will take time, but the idea is to know what you have to do. And don't beat yourself up if you don't do it yet.
हाँ, दैट्स ग्रेट, इट इज़ वंडरफुल। और ये बहुत अच्छी बात मरियला ने हमें बताई है। आपको अगर ये लगता है कि मैंने एक दिन ये फॉलो कर लिया पूरा चीज़ें तो मैं तीसरे दिन से पॉजिटिव हो जाऊँगा, नहीं, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अपने आप को भी और इस शेड्यूल को भी, तब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। सो मरियला, एक बहुत चलते चलते बहुत ज़रूरी सवाल, क्विक आंसर, आई नीड अ क्विक आंसर। क्वेश्चन इज फ्रॉम दिव्या फ्रॉम दिल्ली। दिव्या ने दिल्ली से पूछा है, व्हाई इज इट मोर इजियर टू बी होपलेस देन होपफुल? नेगेटिव होना पॉजिटिव रहने से क्यों ज़्यादा आसान है? Because of the way that we are all, brought up, the way that all cultures more or less function this way. If you think our brain register negative things happening in our life more than the positive. So in order for us to become positive and hopeful, we really need to make an effort. It's not, doesn't come in a spontaneous manner. But if we try hard enough, it will be then our second nature. It's wonderful. तो चलिए, सार जो हमारे पूरे एपिसोड का है वो यही है कि अपने आप को सकारात्मक रखिए। जो पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जकड़ के रखी हैं, जो कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स हैं, उनको छोड़िए, नए ज़माने की बात कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए, क्योंकि मरियला हमारे साथ होती है हमेशा ये बताने के लिए कि खुश रहना कितना आसान है। तो आज के शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मरियला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। And Khushbu, maybe you want to say what is our next topic so that they can send question in. या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो संबंधों पर आधारित है। बेसिकली सेक्स से रिलेटेड इश्यूज हम उठाने जा रहे हैं। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा क्योंकि टीवी पर इस तरह की बात थोड़ी सी चर्चा में शामिल करना ज़रा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हो, आप हमें भेज सकते हैं। सवालों को इस शो में शामिल किया जाएगा और आपके जवाब भी इस शो में मरियला हमें ज़रूर देंगे। तो आज के इस शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।